What's up everyone, Praful here. Welcome back to another episode of the 915 Daily. Today is Thursday, 13th of November. Today was Sensex expiry. First of all, I apologize for not coming up with a market analysis video over the last couple of days as I was in Mumbai attending Grow's historic IPO and was traveling. But we did discuss in our previous analysis video that 25,300 level would be the bottom, and whatever the move that happened in the markets to go to that 25,300 was just to shake out the weak hands. And wahan se the markets have shown a tremendous recovery, and it has shown a one-way rally of 700 points from 25,300 to 26,000 today during the market hours. To talk about today's Sensex expiry, it was hugely volatile. To start with, the Sensex opened with somewhere around 300 points straddle, but the Sensex moved all over the places. As you can see from the charts, within the first 30 minutes, the markets chopped all the directional players by forming some sort of a W pattern where both the long and short players were chopped. Post that, the markets rallied almost 600 points from 84,300 levels to 84,900, along with the rise in vols as well. But at somewhere around 130, when Nifty reached 26,000 levels, वहां से Nifty पे एक short bout of short selling आया, and that resulted in 120 point fall on Nifty, which translated to somewhere around 500 points on Sensex. But Sensex being an expiry day, this 500 points was massive, which shot up puts by almost 10 to 15 times. I got caught off guard twice, one with a fall and second post 3 p.m. where the options kind of tripled and quadrupled within a span of less than 1 minute. And to talk about the commodities, silver is again showing the strength, and after that shakeout move of 20% from the all-time high, silver is again trying to test the all-time high. If at all the ATH is taken this time, we might be witnessing another bout of rally on commodities. Tomorrow is Bihar's elections, and it has got a decent amount of weightage on the Indian markets, and some studies say that if NDA doesn't come to power, the markets might see a sell-off of 3 to 5%. So let's get to the terminal. Let's analyze how the markets are positioned both from the price action front and from the wall front and see what the markets are discounting for tomorrow's big day. So, alright, हमने ये discuss किए थे कि the markets were penetrating this 25,500 only to shake out the weak hands. यहाँ पे एक step kind of a support बना था, तो markets first were to test this level, and यहाँ पे जब fail हुआ तो it had to test this level. But जब A level भी 110 to 150 points का एक thrust मिला downside, that would have pushed a lot of players and turning them bearish. And but when you combined both price action and vols, it was saying a different story, because we did talk about spot vol positive correlation. जब markets गिर रहा था तब actually VIX नीचे जा रहा था, which kind of indicated that the bottom was somewhere around. So that exactly happened, and 25,300 levels के आसपास ये जो wick था, this wick was to shake out all the players from being long. And जैसे वहाँ पे liquidity sweep हो गई, the markets rallied one way from 25,300 to 26,000 levels today. Of course, 26,000 पे एक छोटा सा profit booking आना ही था, because within the span of 3 days, the markets have rallied almost 3.5%, so which would prompt some sort of a profit booking, especially ahead of tomorrow's election day. तो election result है बिहार के कल, and reports ये बता रहा है कि like if at all NDA doesn't win in the tomorrow's Bihar's elections, then the markets might be sold into. And अगर आज के प्राइस एक्शन देखेंगे तो अगर कल का रिजल्ट फेवरेबल निकला तो ये जो हाई है कल के इंट्राडे में ही टेक आउट हो जाना चाहिए. एंड अगर कल के मार्केट आवर्स में अगर रिजल्ट नहीं आया, इफ इट फॉल्स ऑन द वीकेंड, देन आई वुड डेफिनेटली अवॉइड टेकिंग एनी सॉर्ट्स ऑफ ओवरनाइट पोजीशंस टुमारो. तो अगर लोअर टाइम फ्रेम पे जाके बात करें तो येस, टुडे वाज क्वाइट वोलेटाइल. अगर आप देखोगे तो द range of these candles were quite wide. अगर आप यहाँ पे देखोगे तो yesterday the volatility was kind of subsided, but today if you can notice within the first 30 minutes the range of these bars were quite wide, which kind of chopped both the directional, both short and long traders यहाँ पे पूरा एक W type of pattern बना के. Post that there was a one way kind of a rally, and यहाँ पे जैसे 26,000 टच हो गया, this is 26,000 level, right? तो जैसे यहाँ पे 26,000 टच हो गया, वहाँ पे एक शार्प प्रॉफिट बुकिंग का फॉल देखने को मिला 130 पॉइंट्स, विच ट्रांसलेटेड टू समवेयर अराउंड 500 पॉइंट्स ऑन सेंसेक्स. एंड अगर सेंसेक्स की एक्सपायरी की बात करें तो येस, वी ओपनड एट समवेयर अराउंड 300 का वॉल्स, लाइक स्ट्रैडल 300 प्राइस पे ओपन हुआ था, विच वॉज extremely low in my opinion, so I didn't take any short gamma trades. But यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा
होल्ड किया था मार्केट्स ने वॉल को, काफ़ी ज़्यादा मार्केट वो वॉल्स होल्ड कर दिए थे समय अराउंड 250 लेवल्स। तो यहाँ पे मेरा शॉर्ट गामा ट्रेड्स बिल्ड होना शुरू हो गया। एंड जस्ट व्हेन द मार्केट्स हिट 24,900 आई वाज एक्सपेक्टिंग द एक्सपायरी समवेयर अराउंड 25,000 लेवल्स, सॉरी 85,000 लेवल्स, बट वहाँ से अ शार्प फॉल काइंड ऑफ कॉट मी ऑल्सो ऑफ गार्ड। बट towards the end, the markets again showed some sort of a volatility where post 3 p.m. averaging ke time pe the calls went from 1 rupee to 30 rupees and the puts went from 5 rupees to almost 80 rupees. So the markets were all over the place and the premiums were also super jumpy throughout the day. तो अगर कल की बात करें, तो अगर ओपन इंटरेस्ट की बात करें निफ्टी की, so we can see that the markets are again poised at somewhere around 25,900 and 26,000 के लेवल्स की में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रैडल्स बिल्ड हो चुके हैं एंड काफ़ी अच्छा ओपन इंटरेस्ट भी बिल्ड हो चुका है। सो यू कैन नोटिस दैट अ लॉट ऑफ कॉल्स हैव बीन सोल्ड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे। जो 26,000 से मार्केट में एक प्रॉफिट बुकिंग आया, यहाँ पे सारे जो कॉल एडिशन जो ओपन हुआ है, ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है, that happened when the markets started to see some sort of a profit booking. But throughout the day 25,900 पे काफ़ी ज़्यादा straddles थे and the 25,900 पे straddles would make that would see that the markets would be moving somewhere between 300 points, that is 25,600 and 26,200. That's what is markets are indicating for the next 3 days of action. अगर हम निफ्टी के straddle की बात करें, you can see that throughout the day the markets have actually gained in value, especially post 2 o'clock. पोस्ट 2 o'clock आप देख सकते हैं कि 250 से लेके स्ट्रैडल स्पाइक हुआ है 270 तक। एंड आई फील दैट टुमारो ओवर द फर्स्ट 1 or 1.5 hours द मार्केट्स विल स्टिल सी सम सॉर्ट ऑफ अ वॉल स्पाइक। एंड जैसे रिजल्ट्स क्लियर होता जाएगा तो वहाँ से प्रीमियम्स टूटना शुरू हो जाएंगे एंड प्रोबेबली आई एम एक्सपेक्टिंग, सो दिस इज माई एक्सपेक्टेशन, वजह होता है कि नहीं होता है आई एम नॉट श्योर, बट टुमारो ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स at one point this should reach somewhere around 300 levels. I would not be surprised even if the straddle reaches 300 rupees, and from there the markets will start to move violently while the straddle kind of dips. But irrespective of what happens tomorrow, I'll avoid carrying the positions because जो markets में जब भी event रहता है उस event को market एक knee-jerk reaction देता है during the intraday, but उसका एक calculated result मिलता है over the weekend when the markets get time to process the data, and then so मंडे एक काफ़ी बड़ा गैप या गैप डाउन खुल सकता है इफ एट ऑल द मूवमेंट डजंट गेट डिस्काउंटेड इन टुमारोज प्राइस एक्शन। सो अगर कल की प्राइस एक्शन की बात करें, हमारे ट्रेडिंग प्लान की बात करें, तो आई विल नॉट बी टेकिंग एनी प्राइस एक्शन बेस्ड टुमारोज बिकॉज दैट इज काइंड ऑफ स्टुपिडिटी व्हेन द मार्केट्स आर प्राइम टू मूव इन बोथ द डायरेक्शंस बेस्ड ऑन द न्यूज़। तो न्यूज़ आता है तो ऑब्वियसली some party will be like ahead at one point and some other party will come ahead in some other point. So during this time there will be extreme volatility, and considering the fact that the premiums are not that great, though premiums 240 से लेके 270 तक जो spike हुआ है, but if you notice that 270 points is nothing, तो यहाँ पे 26,000 है, यहाँ पे 26,700 है, तो this is just 300 points. तो market इतना तो event day पे काफ़ी आसानी से move करेगा. So tomorrow's candles might look so big that even today's wide range candles also look pretty tiny in comparison. So tomorrow I'll wait for the opportunities, and कल के लिए क्या प्लान बन सकता है मैं अभी नहीं बोल सकता, but to be honest if at all we open flat and during the day यहाँ पे एक breakout मिल जाता है, तो then that can be taken as some sort of a confirmation जो news है, news is in line with what the markets are discounting, and यहाँ पे एक breakout को trade कर सकते हैं of course with a strict stop loss. Position sizing काफ़ी छोटी रहेगी, and अगर मैं trade करना चाहता हूँ तो if at all the premiums are below 300, then I'd be taking the trades, whatever trades, it might be mean reversion trades, it might be trend following trades, but using debit structures. अगर 300 के नीचे रहता तो, अगर 300 के ऊपर रहता तो then I'll be taking some sort of a credit based spreads depending upon where the direction of the market might be. So if at all we open a gap down, then I'll be extremely careful because gap down अगर markets ने price कर दिया है, it means that market is little spooked about something about the elections and something about the results. So I'll wait for the initial 1 hour का initial balance to form, and उस इनिशियल बैलेंस के ब्रेकआउट को मैं ट्रेड करना पसंद करूंगा. बट अपार्ट फ्रॉम दैट टुमारोज प्राइस एक्शन माइट नॉट बी दैट सिग्निफिकेंट, स्पेशली टिल 11 o'clock 11:30. जैसे जैसे न्यूज़ आना शुरू हो जाएगा, जैसे जैसे एक ट्रेंड क्लियर हो जाएगा बिहार के इलेक्शंस का, तो दैट इज व्हेन द मार्केट्स विल स्टार्ट टू शो द प्राइस एक्शन. तो आई विल ऑल्सो प्लान फॉर द
सेम आई ऑल्सो प्लान फॉर सिमिलर काइंड ऑफ अ प्राइस एक्शन एंड मार्केट के साथ प्राइस एक्शन के साथ सिंक रह के ही ट्रेड करना पसंद करूंगा. बट दिस इज फॉर श्योर, इफ अट ऑल द स्ट्रैडल प्रीमियम्स आर अबव 300, लेट्स से 10 o'clock 11 o'clock के आसपास 300 के ऊपर स्पाइक हो जाता है स्ट्रैडल प्रीमियम्स, देन प्रॉबली आई विल बी ट्राइंग टू टेक सम सॉर्ट ऑफ अ क्रेडिट स्प्रेड्स. एंड इफ एट ऑल 300 के नीचे रहेगा तो डेबिट स्प्रेड्स वुड मेक मोर सेंस फॉर मी, बिकॉज उस डेबिट स्प्रेड को लेट्स से लाइक अ put spread या call spreads को later we can convert it into ratios as well. But to start off with, I take some sort of a debit spread if at all I want to play the direction. Alright, so that's the plan of action for tomorrow, guys. I'll see you again after tomorrow. We'll see how the market absorbs tomorrow's news. Till then, take care. Bye-bye. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.